Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about probability. These chapters from your 10th mathematics NCERT. तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए the theory of the probabilities and the theory of errors now constitute a formidable body of a great mathematical interest and of a great practical importance. Okay, ये आर.एस. वुडवर्ड इन्होंने कहा है. तो अभी प्रोबेबिलिटी जो है ऑलरेडी अपने बेसिक इसका कंसेप्ट जो है प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था, ऑलरेडी आपको पता है. जस्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आगे के जो स्टेप है वही देखना है. प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये संभाव्यता होती है. मतलब किसी भी चीज़ को हमें अगर आइडेंटिफाई करना हो, ये मतलब उसका एक एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन इसका. इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड अबाउट एक्सपेरिमेंटल मतलब इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट विच वेयर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट. ओके, सो वी डिस्कस एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 1000 टाइम्स in which we the frequencies of the outcomes were as follows. हेड यहाँ पर 455 टाइम्स आ गया, टेल यहाँ पर 545 टाइम्स आ गया. तो प्रोबेबल हम कह सकते हैं कि यस, अभी फॉर एग्जांपल रेन आने वाली है या नहीं, टॉस में हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम मैथमेटिकल अगर नंबर में काउंट करते हैं तो यहाँ पर वही तो हमें लर्न करना है. इन द प्रोबेबिलिटी हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबल सिचुएशन को हम मेजर कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल्स वैल्यूज़. ओके, सो वहाँ से हमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे आइडिया आ जाता है कि कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए. ओके, सो द बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट द इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड इज़ 455/1000 मतलब 0.455. ओके, सो मतलब 50% से लेस यहाँ पर आ गया. 0.45 मतलब 45.5%, मतलब ये 50% से कम है. ओके, एंड द गेटिंग अ टेल इज़ 0.545 मतलब 54%, मतलब ये 50% से ज़्यादा है. ऑल्सो सी एग्जाम्पल नंबर 1, chapter 15 of a class 9 mathematics textbook. Note that these probabilities are based on the result of an actual experiment of tossing a coin 1000 times. Okay, so for this reason they are called experimental or empirical probabilities. In fact, experimental probabilities are based on the result of actual experiment and adequate recordings of the happening of the events. Moreover, these probabilities are only estimates. If we perform the same experiment for another 1000 times, we may get different data giving different probability estimates. So in a class 9, you toss a coin many times and noted the number of times in turn up heads. Refer to activities 1 and 2 of a chapter 15. You also noted that as the number of tosses of the coin increase, the experimental probability of getting a head or tail come closer and closer to the number half. Not only you, but many other persons from different parts of the world have done this kind of experiment and recorded the number of heads that turn up. Okay, तो students for example the 18th century French naturalist come to Buffon toss a coin 4040 times and got 2048 heads. The experimental probability of getting a head in this case was 2048 upon 4040, that is 0.507. Okay, so J. Carries from Britain recorded 5067 heads in 10,000 tosses of a coin. The experimental probability of getting a head in this case, how much? It's a 0.5067. Okay, so statistician Carl Person spent some more time making 24,000 tosses of a coin. He got 12,012 heads, that and thus the experimental probability of the head obtained by him was 0.5005. So now suppose we ask, what will be the experimental probability of a head if the experiment is carried on up to say 1 million times or 10 million times or so on. You will intuitively feel that as the number of tosses increases, the experimental probability of head seems to be settling down around the number 0.5. करेक्ट, मतलब सभी जो नंबर्स थे 0.5 के नियर ही आ रहे थे. समटाइम्स 0.45 आ रहा था, समटाइम्स 0.48 आ रहा था, समटाइम्स 0.54 आ रहा था. सो दैट इज हाफ, विच इज व्हाट वी कॉल द theoretical probability of getting a head. As you will see in the next section, in this chapter we provide an introduction to the theoretical probability of an event and discuss simple problems based on this concept. So probability, a theoretical approach. Let us consider the following situation. Suppose a coin is tossed at a randomly. Okay, so when we speak of a coin, we assume it to be fair, that is it's a symmetrical, so that there is no reason for it to come down more often on one side than the other. We call this property of
the coin as being unbiased. Okay, so by the phrase random toss, we mean that the coin is allowed to fall freely without any bias or interference. Okay, so we know in advance that the coin can only land in one of the two possible ways, either head up or tail up. We dismiss the probability of its landing on its edge, which may be possible. For example, if it falls on sand, we can reasonably assume that each outcome, head or tail, okay, is as likely to occur as the other. We refer to this by saying that outcomes head and tail are इक्वली लाइकली. ओके, मतलब अगर हम कोई भी कॉइन जो है टॉस कर लेते हैं तो यहाँ पर हेड ही आने वाला है या तो टेल ही आने वाला है. ओके, अनदर कोई जो उसका रीज़न मतलब आंसर जो है मतलब जो उसकी जो रिबन होती है वो नहीं आने वाली. ओके, मतलब जब भी हम यहाँ पर कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका आउटकम क्या आने वाला है, यहाँ पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसके अनदर कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा. ठीक है, सो फॉर अनदर एग्जांपल, इफ इक्वली लाइकली आउटकम, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस. ओके, डाई करो हम यहाँ पर थ्रो करते हैं. सो फॉर अस अ डाई विल ऑलवेज मीन अ फेयर डाई. वॉट द पॉसिबल आउटकम्स, दे आर 1 2 3 4 5 6. करेक्ट. सो ईच नंबर हैज़ द सेम possibility of showing up. So equally likely outcomes of throwing a die are 1 2 3 4 5 6. Are the outcomes of every experiment equally likely? Let us see. Suppose that a bag contain 4 red balls. Okay, एक बैग में कितने बॉल्स है, 4 रेड बॉल्स है एंड एक ब्लू बॉल है, एंड यू ड्रॉ बॉल विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. मतलब आपने बैग में देखा नहीं और आप एक एक बॉल निकालते जा रहे हो. ओके, तो व्हाट आर द आउटकम्स, उसके आउटकम क्या होंगे. फर्स्ट टाइम आपके रेड बॉल आ गया, देन अगेन एक 1 टाइम्स ब्लू बॉल आ गया. सो आर द आउटकम्स अ रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इक्वली लाइकली. Since there are 4 red balls and only 1 blue ball, you will agree that you are more likely to get red ball, correct, than as comparatively blue ball. So the outcomes a red ball or a blue ball are not equally. मतलब outcome यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल 10 टाइम्स आपने बॉल निकाला, ठीक है, बैग में से. तो 10 में से ऐसा थोड़ी ना 5 टाइम्स ब्लू बॉल ही आने वाला है, 5 टाइम्स रेड बॉल ही आने वाला है. ऐसा लाइकली हम नहीं कह सकते, बिकॉज रेड बॉल की जो काउंट है वो ज़्यादा है एज कम्पेरेटिवली ब्लू बॉल से. ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पर जो आउटकम है वो इक्वली नहीं आएगा. ठीक है, सो हवेवर द आउटकम ऑफ अ ड्राइंग अ बॉल ऑफ एनी कलर फ्रॉम द बैग इज इक्वली लाइकली. सो ऑल एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट नेसेसरीली have equally likely outcomes. So however, in this chapter, from now on, we will assume that all the experiments have equally likely outcomes. In class 9, we define the experimental or empirical probabilities P of E of an event E as P of E is equal to number of trials in which the event happened upon total number of trials. The empirical interpretation of probability can be applied to every event associated with an experiment which can be repeated a large number of times. The experiment of repeating an experiment has some limitations, as it may be very expensive or infeasible in many situations. Of course, it works well in coin tossing or die throwing experiments, but now how about repeating the experiment of launching a satellite in order to compute the empirical probability of its failure during launching, or the repetition of the phenomenon of the earthquake to compute the empirical probability of a multi-stored building getting destroyed in the earthquake. In experiments where we are prepared to make a certain assumptions, the repetition of an experiment can be avoided, as the assumptions help in directly calculating the exact theoretical probability. अभी देखिए स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या है, theoretical probability है. probability में ऐसे हम नहीं कह सकते कि यस दिस इज एक्यूरेटली इतना ही आंसर आने वाला है, ऐसा नहीं होता. ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर तो यहाँ पर प्रोबेबल सिचुएशन अजम्पशन हमारा क्या हो सकता है. ओके, तो यहाँ पर देखिए, द assumption of equally likely outcomes which is valid in many experiments as in the two examples above of a coin and a die is
one such assumptions that leads us to the following definition of probability of an event. The theoretical probability, also called the classical probability of an event E, written as P of E, is defined as P of E is equal to number of outcomes favorable to E upon number of all possible outcomes of the experiment. ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ओके, यही आपको यूज करना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ओके. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द experiment, okay. So where we assume that of the experiment are equally likely, we will briefly refer to theoretical probability as probability, okay. The definition of probability was given by पेरी साइमन लैपलेस इन 1795. सो यहाँ पर उनके बारे में उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया. आपके बुक में ये इन्फॉर्मेशन होगी, जस्ट आप इसे रीड करिए फॉर द यूर जनरल नॉलेज, ठीक है. सो लेट अस फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर सम ऑफ द इवेंट्स एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट्स वेयर equally likely assumptions tool, okay, holds. So example number 1, find the probability of getting a head when the coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. तो देखिए solution इसका, in the experiment of tossing a coin once, the number of possible outcomes is 2, head H and tail T. Let E be the event getting a head. The number of outcomes favorable to E is 1. Therefore, P of E is equal to P head, number of outcomes favorable to E upon number of all possible outcomes is equal to 1 by 2. Similarly, if F is the event getting a tail, then P of F is equal to P of tail, मतलब 1 by 2, correct. ये हाफ क्यों आ गया, ऑलरेडी हमने इसे डिस्कस किया था इन द प्रीवियस सेक्शन में. सो एग्जांपल नंबर 2, अ बैग कंटेनर रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग द सेम साइज. सभी क्या है, सेम साइज के हैं. कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट येलो बॉल, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल, ओके. तो टोटल बॉल्स कितने पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर 3 बनेंगे, करेक्ट. हाउ मच यहाँ पर 3. सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल येलो आने के कितने हो जाएंगे, 1/3 होगा. रेड आने के लिए अगेन 1/3 एंड ब्लू आने के लिए भी यहाँ पर 1/3. सो रिमार्क्स यहाँ पर क्या है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट. सो इन एग्जाम्पल 1, बोथ द इवेंट्स E and F आर एलिमेंट्री इवेंट्स. सिमिलरली इन एग्जाम्पल 2, ऑल द 3 इवेंट्स Y, B, R आर एलिमेंट्री इवेंट्स, ओके. सो इन एग्जाम्पल 1 वी नोट दैट P of E प्लस P of F इज इक्वल टू 1. एंड एग्जाम्पल 2 जो अभी हमने देखा वहाँ पर P of Y प्लस P of R इज इक्वल प्लस P of B इज इक्वल टू 1. सो ऑब्जर्व दैट, ये ध्यान में रखना है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स of experiment is how much, it's a 1. So this is the true in general also. So suppose we throw a dice once. अभी हम क्या करें, डाई को थ्रो कर रहे हैं. So what is the probability of getting a number of greater than 4? What is the probability of getting a number less than or equal to 4? तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने यहाँ पर हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आने वाले, ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4 कितने नंबर्स है, 5 and 6. देर आर 2 ओनली नंबर्स. सो 2/6 यहाँ पर आ गया, मतलब 2 1s are 2 2 3s are, तो 1/3 आ गया. एंड देन लेट एफ बी द इवेंट गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. 1 2 3 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है. बट यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, लेस देन और इक्वल टू 4 कहा है, तो यहाँ पर 4 नंबर्स आ जाएंगे, ओके. सो फेवरेबल आउटकम्स में तो 4/6 2/3 यहाँ पर आ गया. इन दोनों को ऐड करिए, आपको 1 ही रिजल्ट में आएगा. Are the events E and F in the example above elementary events? No, they are not, because the event E has 2 outcomes and the event F has 4 outcomes, okay. Elementary event ध्यान में रखना है आपको. So from example 1 we note that P of E plus P of F is equal to plus half 1, and second example में भी यहाँ पर P of E plus P of F is equal to 1/3 plus 2/3 is equal to 4. So where E is the event getting a number greater than 4 and F is the event getting a number equal than or less than 4, okay. So note that getting a number not greater than 4 is the same as the getting a number less than or equal to 4, and vice versa. In 1 and 2 above, is F not the same as not E? Yes, it is. We denote that the event not E by E bar, okay. So P of E plus P not E is equal to 1. So P of E plus P of not मतलब E bar हम कह सकते हैं. So which gives the P of E bar is equal to 1 minus P of E. So in general, it's true that for an event E, P of E bar is equal to 1 minus P of E. ओके. सो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है. सो द इवेंट ई बार रिप्रेजेंटिंग नॉट ई इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, ओके. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई. सो वी ऑल्सो से दैट
E and E bar are complementary events. Before proceeding further, let us try to find the answer to the following questions. What is the probability of getting number 8 is the single throw of a die? What is the probability of getting a number less than 7 in a single throw of a die? So let us answer first one. We know that there are only 6 possible outcomes in a single throw of a die. These outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Since no face of the die is marked 8, so there is no outcomes favorable to 8. That is, the number of such outcomes is 0. In other words, getting 8 in a single throw of a die is impossible. So P getting 8 is equal to 0 by 6 is equal to 0. So that is the probability of an event which is impossible to occur is 0. So such an event is called an impossible event. Then answer 2, since every face of a die is marked with a number less than 7, it is sure that we will always get a number less than 7 when it is thrown once. So the number of favorable outcomes is the same as the number of all possible outcomes, correct? So which is the 6. Therefore probability of E क्या होने वाला है यहाँ पर? P getting the number less than 7, 6 by 6 मतलब 1 आ जाएगा. So the probability of an event which is sure to occur once such an event is called sure event, okay, और a certain event उसे हम कहते हैं. तो अब तक हमने क्या किया? एलिमेंट्री इवेंट देखा, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर देखा, देन श्योर इवेंट भी हमने यहाँ पर देखा. सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी P of E वी सी दैट द न्यूमरेटर मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट E is always less than or equal to the denominator, the number of all possible outcomes, okay. So therefore O 0 is less than or equal to P of E or is less than or equal to 1. मतलब प्रोबेबिलिटी 0 to 1 में ही होती है. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स. हैव यू सीन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स? इट कंसिस्ट 52 कार्ड्स, करेक्ट, विच आर डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स मतलब ऑफ 13 कार्ड्स ईच, मतलब स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स. तो क्लब्स एंड स्पेड्स आर ब्लैक कलर एंड while hearts and diamonds are in the red color, correct? The cards in each suit are ace, king, queen, jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ओके, सो किंग्स, क्वींस एंड जैक्स आर कॉल्ड फेस कार्ड्स. उसे हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं, ओके. एस मतलब 1 वाला, ओके, यहाँ पर ए लिखा होता है वो एस होता है. So example 4, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace, not be an ace, okay. तो कितने ace होते हैं वो आपको पता होना चाहिए. So there are 4 ace in the deck. So therefore what is the probability? 4 by 52 मतलब 1 by 13. Sure, correct. And then F be the event card drawn is not ace, okay. अभी कितने में हो जाएगा? तो 52 minus 4, 48 यहाँ पर आ जाएगा. तो 48 by 52 we get 12 by 13. The remark क्या है यहाँ पर? Note that F is nothing but complement of E. Therefore we can also calculate P of E as P of F is equal to P of E bar, मतलब complement of E is equal to 1 minus P of E is equal to 1 minus 1 by 3, 12 upon 30 आएगा, 13 आएगा. So two players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. It is in the known that a probability of Sangeeta winning a match is 0.62. So what is the probability of Reshma winning the match? 1 minus probability of Sangeeta, correct. So let S and R denote the events of Sangeeta wins the match and Reshma wins the match respectively. The probability of Sangeeta winning is equal to P of S is equal to 0.62. The probability of Reshma winning P of R is equal to 1 minus P of S, okay. So as the events R and S are complementary, so 1 minus 0.62 is equal to 0.38. The next one, Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have, first one, different birthdays and same birthday, okay. So ignoring a leap year. Out of the two friends, one girl says Savita's birthday can be any day of the year. Now Hamida's birthday can also be any day of 365 days in the year. So we assume that these 365 outcomes are equally likely. So if Hamida's birthday is different from Savita's, the number of favorable outcomes for the birthday is 365 minus 1 is equal to 364 आ गया. So P is equal to Hamida's birthday is different from Savita's birthday, तो 365 upon 364 upon 365, ओके. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी. सो P मतलब सविता एंड हमीदास हैव अ सेम बर्थडे, तो 1 माइनस P हो जाएगा, तो 1 माइनस 364 बाय 365, तो वी गेट 1 अपॉन 365.
Then there are 40 students in a class 10 of a school, of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as the class representative. She writes the name of each student on a separate card. The cards being identical, then she puts cards in a bag and states them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is name of first a girl and a boy? So solution, there are 40 students and only one name cards has to be chosen. The number of all possible outcomes is 40. The number of outcomes favorable for a card with the name of girls is equal to 25. बिकॉज यहाँ पर क्या करना है हमें, ऑलरेडी गिवन दिया उन्होंने 25 गर्ल्स टोटल नंबर्स. सो देयर फॉर पी इज इक्वल क्या हो जाएगा 25/40 मतलब 5/8. द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर अ कार्ड विद द नेम ऑफ बॉय 15/40 मतलब 3/8. सही बात है. सो पी ऑफ बॉय इज इक्वल टू P1 माइनस पी ऑफ नॉट बॉय इज इक्वल मतलब 1 माइनस पी ऑफ गर्ल मतलब यहाँ पर 3/8. ऐसे भी आ सकता है, आप इससे इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हो. So then a box contain 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at a random from the box, what is the probability that it will be white, blue and red? So saying that a marble is drawn at a random is a short way of saying that all the marbles are equally likely to be drawn. So therefore the number of possible outcomes is equal to 3 plus 2 plus 4 is equal to 9. So let W denote the event the marble is white, B denote the event the marble is blue, and R denote the event marble is red. The number of outcomes favorable to the event W is equal to 2. So PW is equal to 2/9. Similarly, P of B is equal to 3/9 मतलब 1/3 and P of R is equal to 4/9. So note that P of W plus P of B प्लस पी ऑफ आर इज इक्वल टू 1 ही आएगा. इनके एडिशन करके देखिए, ये इसके एडिशन और इसके एडिशन और इसके तीनों के एडिशन करके देखिए आपको 1 ही मिलेगा. Then Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Say one is of ₹1 and other is ₹2. What is the probability that she gets at least one head? So we write H for head and T for tail. When 2 coins are tossed simultaneously, the possible outcomes are HH, HT, TH and TT, which are all equally likely. Here HH means head up and on the first coin, say on ₹1, and head up on the second coin ₹2. Similarly, HT means head up on the first coin and tail up on the second coin and so on. The outcomes favorable to the event E, at least one head are HH, HT and TH. क्यों यहाँ पर ऐसे? सो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल इज E इज इक्वल टू 3. बिकॉज यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर कितना चाहिए, तो H एक बार तो आना चाहिए, तो यहाँ पर HH, HT एंड TH हो जाएगा. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E 3/4. Okay, so probability the Harpreet gets the at least one head is 3/4. So you can also find the probability of E as follow. तो complement of E आपको पता होना चाहिए, तो 1 minus 1/4 3/4 ही आएगा. So did you observe that in all the examples discussed so far, the number of possible outcomes in each experiment was finite? If not, check it now. So there are many experiments in which the outcome is any number between two given numbers, or in which the outcome is every point within a circle or rectangle, etc. Can you now count the number of all possible outcomes? As you know, this is not possible since there are infinitely many numbers between two given numbers, or there are infinitely many points within a circle. So the definition of a probability which you have learned so far cannot be applied in the present form. So what is the way out to answer these? Let us consider the following example. In a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. So what is the probability that music will stop within the first half minute after starting? So here is the possible outcomes are all the numbers between 0 to 2. Correct. This is the portion of the number line from 0 to 2. So let E be the event that the music is stopped within the first half minute. So the outcomes favorable to E are points on the number line from 0 to half. The distance from 0 to 2 is 2, while the distance from 0 to half is half. Since all the outcomes are equally likely, we can argue that of the total distance of 2, the distance favorable to the event E is half.
So P of E is equal to distance favorable to the event E upon total distance in which outcomes can lie. So half upon 2 is equal to 1 by 4. So can we now extend the idea of example 10 for finding the probability as the ratio of favorable area to the total area. So a missing helicopter are reported to have क्रैश. देखिए इस तरीके से जो एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में आते हैं. सो यहाँ पर एक लेक है, यहाँ पर कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर लेक में आके गिरा, कितने प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर ये फॉरेस्ट में आके गिरा. ओके, तो यहाँ पर हम एरिया की कंसेप्ट से इसे निकाल सकते हैं. ओके, सो क्वेश्चन क्या है, मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव अ क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर. ओके, मतलब आपको क्या करना है, लेक का एरिया निकालना पड़ेगा. आप लेक का एरिया अपॉन टोटल एरिया अगर निकालते हो आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी. ओके, सो हेलीकॉप्टर इक्वली लाइकली टू क्रैश एनीवेयर इन द region. So area of the entire region where the helicopter can crash is equal to 40.5 किलोमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ द लेक क्या हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हेलीकॉप्टर क्रैश इन द लेक 7.5 अपॉन 40.5. सो 5 अपॉन 27 यहाँ पर आ गया. अ कार्टून consists of 100 shirts of a carton consists of 100 shirts of which 88 are good, 8 have minor defects and 4 have a major defects. Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirts which have major defects. One shirt is drawn at a random from a carton. What is the probability that acceptable to Jimmy and acceptable to Sujata? One shirt is drawn at a random from the carton of 100 shirts, so therefore there are 100 equally likely outcomes. The number of outcomes favorable to Jimmy is equal to 88. क्यों? बिकॉज यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, सो विच आर 88 आर गुड. सो पी आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 88 by 100 मतलब 0.8 आ जाएगा, 0.88. Then the number of outcomes favorable by Sujata is equal to 88 plus 8 because 8 have a minor defects. Okay, so 88 plus 8 96 हो गया. So 96 by 100 मतलब 0.96 यहाँ पर probability आ गई. तो shirts acceptable by Sujata मतलब 96% यहाँ पर सुजाता एक्सेप्ट कर सकती है, 88% जिमी जो है एक्सेप्ट कर सकता है. Now the two dice, one blue and one gray, are thrown at the same time. Write down all possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13 less than or equal to 12. So solution, when the blue die shown 1, the gray die could show any one of the numbers 1, 2, 3, 5, 6. The same is true when the blue die shows 2, 3, 4, 5, 6. The possible outcomes of experiment are listed in the table below. The first number in each order pair is in the number appearing on the blue die and the second number is in the gray die. Note that the pair 1, 4 is different from 4, 1. So why? So the number of possible outcomes is equal to 6 multiplied with 6 is equal to 36. The outcomes favorable to the event, the sum of the two numbers is 8. Denoted यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 6, 3, 5, 4, 5, 5, 3, 6, 2. That the number of the outcomes favorable is to E is equal to 5. Hence probability of E is equal to 5 by 36. As you can see the from figure 15.3 यहाँ पर जो diagram दिख रहा है आपको, there is no outcomes favorable to the event F. So the sum of a two number is 13. Probability of A is equal to 0 upon 36 मतलब 0 आ जाएगा probability. And as you can see, all the outcomes are favorable to the event G. Sum of the two numbers less than or equal to 12, 36 upon 36 मतलब 1 आ गया. सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे. तो आपने यहाँ पर क्या क्या लर्न किया. सो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई रिटर्न एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिफाइन एज is equal to number of outcomes favorable to E upon number of all possible outcomes of the experiment, where we assume that the outcomes of the experiment are equally likely. The probability of sure event is 1, probability of impossible event is 0, probability of an event E is the number of probabilities such that probability of E is greater than or equal to 0 or less than or equal to 1. An event having only one outcome is called the elementary event. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. For any event, probability of E plus complement of E is equal to 1, where E bar stands for not E, matlab E and E bar are called complementary events.
तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।